Now, next question related to Fourier sine transform. Find the Fourier sine transform of e raised to power minus ax upon x. Here, f of x is equal to given e raised to power minus ax upon x. Then Fourier sine transform represented by fs bar s is fs of fx is equal to integral 0 to infinity fx sine sx into dx. Then fs bar s is substituting the value of fx from here e raised to power minus ax upon x into sine sx into dx. Now, differentiating both sides with respect to s using Leibniz rule of differentiation under integral sign. क्योंकि हमारे पास राइट हैंड साइड पे ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स अपॉन एक्स है, तो इस एक्स को रिमूव करने के लिए हम अगर यहाँ पे एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये टर्म साइन एस एक्स हमें एक्स देगी मल्टीप्लाई में. तो इस वजह से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं बाय लेबनीज रूल अंडर इंटीग्रल साइन. Leibniz rule of differentiation under integral sign with respect to s, because left hand side is function of s, that's why we are differentiating that equation with respect to s. So d by ds of fs bar s can be written as integral 0 to infinity differentiating with respect to s, then curly by curly s e raised to power minus ax upon x into sine sx into dx. अपर लिमिट के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे ज़ीरो हो जाएगा, लोअर लिमिट के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे वो भी ज़ीरो हो जाएगा. देन इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी विद रिस्पेक्ट टू एस जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन एस एक्स देगा हमें एक्स ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स अपॉन एक्स और साइन एक्स का कोस एस एक्स इंटू डी एक्स. एक्स से एक्स एलिमिनेट हो जाएगा हमारा, लेफ्ट हैंड साइड है डी बाई डी एस ऑफ एफ एस बार एस. नाउ डी बाई डी एस ऑफ एफ एस बार एस एंड राइट हैंड साइड इज इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स कोस एस एक्स इंटू डी एक्स. नाउ यूजिंग द रिजल्ट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स कोस bx into dx can be written as a upon a square plus b square. So here in the place of b we are having s, then substitute the value of s, then we get the result a upon a square plus s square, and left hand side d by ds f s bar. Now we want to remove derivative, then integrate both sides with respect to s. Integrating with respect to s, we have fs bar s is one integration of this 1 upon a square plus s square, 1 upon a tangent inverse s by a behave like 1 upon x square plus a square. So 1 upon a tangent inverse x by a, here s replaced by x plus constant of integration fs bar s is tangent inverse s by a plus c. Now we want to find out the value of the constant, arbitrary constant c. For this, substituting the value s at 0, fs bar at 0, then tangent inverse at 0 is 0, then
This is the second equation. Fs bar at 0 is C, and this is first equation. Substituting the value s is equal to 0 in first, we get Fs bar at 0. As sine 0 is 0, then complete integral becomes 0. Now from second and third we get c is equal to 0. Now substituting the value of c0 in star, put c is equal to 0 in star equation, we get Fs bar s is tangent inverse s by a, and this is the Fourier sine transform of e raised to power minus ax.